And Venkatesh Swamin, they're both going to perform the puja. So as they instruct you, please. Om Om Dhruvam Deva Varuna Dhruvam Devo Brihaspatihi Dhruvam Indraschagnishcha Rashtram Dharyatam Dhruvam Parvata iva Vichakalihi Indrajiveha Dhruvastishtha Viharashtamudharaya Abhidishthakritam yadaha Adharesham dushatravaha Indra iva vritraha tishtha Devim vajamadhanayam dadevaha Tam vishwarupa pasavo madanti Sano mantre samurjam duhana Dhenurvagasmanu vadastodayadu Shumuhurtos vidyana grunhandu Shumuhurtostu Supradrishtadamastu Ridhyasmahakye namaso nasatya Mitram devam mitradheyam no astu Anuradhan havisa dardhayandahan Shatam jivena saradasavirahan Dirghayushyamastu Om namasadase namasadasaspadase namasakheinam bhaganan chakshushe namo dive Saprasasabham ve gopajatye sasatyas sabhasadahan Tanindrijavadakuru sarvamajirupasatan Sarvebhya Sri Vaishnavebhyo namaha Swaminah bhavadam padamule bhaja samarpitam Imam sauvarnamajim dakshinam yatkim sabdakshinam Tambholam jasvikritya அப்படியே எல்லாரும் வந்து அவாவ கோத்திரம் நட்சத்திரம் பேரு அப்படியே எல்லாரும் தனியாக சொல்லிடுவாங்க ैत्रमकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकरवासो जातस्य वेङ्कटेशधर्मणस्य यजमानस्य अस्मदे नक्षत्रे मेषराशो जातायाः विजयलक्ष्मीनाम्याः स्याः धर्मपत्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशो जातस्य सत्यनारायणधर्मणस्य यजमानस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः लक्ष्मी नरसिंहशर्मणस्य यजमानस्य सविता नक्षत्रे मकरराशो जातस्य इन्द्रानाम्याः कौण्डन्यगोत्रोद्भवस्य स्वाती नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः शालीशगोत्रोद्भवस्य पुनर्वसो नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य जनार्दनशर्मणः अस्मती नक्षत्रे मेषराशो जातायाः सुगुणापतीनाम्याः श्रवण नक्षत्रे मकरराशो जातस्य प्रणवशर्मणः पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीनराशो जातस्य श्रीशर्मणस्य यजमानस्य उत्सगोत्रोद्भवस्य हस्ता नक्षत्रे कन्याराशो जातस्य मुरळीशर्मणस्य यजमानस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातायाः स्मृतानाम्याः स्याः धर्मपत्न्याः मूला नक्षत्रे धनुराशो जातस्य सात्विकशर्मणः रोहिणी नक्षत्रे शुभराशो जातस्य अच्युत नरसिंहशर्मणस्य यजमानस्य कौशीजगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षो नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य भार्गवीनाम्याः शतभिषक् नक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य सुमन् शर्मणः अस्मती नक्षत्रे मेषराशो जातस्य अश्विनीनाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुराशो जातस्य
स्मर्शर्मणोऽस्य यजमानस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य मका नक्षत्रे संहराशो जातस्य नारायण शर्मणोऽस्य यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य स्वकलिंग शर्मणः तदभिषक् नक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य सदभिषक् नक्षत्रे कुम्भराशो जातायाः विजमे शर्मणोऽस्य यजमानस्य पुनर्वसो नक्षत्रे कुतुलराशो जातायाः शिवानी नाम्न्याः पुनर्वसो नक्षत्रे कुतुलराशो जातस्य हंसक् शर्मणः काल सत्यनारायण पूजैக்கு சத்யநாராயண பூஜை சங்கல்பம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்கலாம் வந்து சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்றது அப்படியே ரிசீவ் பண்றீங்களா? ஆவயோஹோ அஸ்மாகம் சஹ குடும்பானாம் க்ஷேம ஸ்தைர்ய தைர்ய வீர்ய விஜய अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं दिव्य भौम आंतरिक्ष उत्पाद दुष्स्वप्न दुष्शकुन दुश्चिंतन दुष्कीर्ति निवृत्ति परैः कृत क्रियमाण करिष्यमाण मंत्र यंत्र तंत्र आभिचार विषचूर्ण प्रयोह मोहन स्तंभन उच्चारण बंधनादि समस्त जनित उपद्रव निवारणार्थम रवि अंगारक जीवार्क शुक्र सोम सौम्य राहुकेतु क्षारवशात् त्रेकांश नवांश दशांश त्रिंशांश षष्ठी अंशात् अंशवत् समस्त जनित उपद्रव निवारणार्थं विशेषतः मम सककुटुम्बस्य इह दृष्टि परदृष्टि परमदृष्टि छन्ददृष्टि बन्धुदृष्टि नागदृष्टि सर्पदृष्टि सकल नेत्र वीक्षण्य दृष्टि समस्त दृष्टि दोष निवारणार्थं रवि अंगारकात् मम आवयोः अस्माकं सह कुटुम्बानां जातक रीत्यादि नक्षत्र रीत्यादि गोचार रीत्यादि आदित्यादि नवग्रह दोषः निर्दोषणार्थम् आदित्यादि नवग्रह द्वारा भगवते प्रीत्यर्थम् अस्मिन् दिने यथाशक्ति यथावकाशम् यथा द्रव्य रमादेवी सहिताय श्री सत्यनारायण स्वामी पूजा विरत अद्य नवग्रह आराधनं च कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्त्विति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तथास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु। अस्मद्गुरुवराभ्यो नमः। शुक्लां भरतरं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य कृतवक्त्राद्या पारुषत्या परश्वतं विश्वक्सेनं नमाश्चये। परिश्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिणमाप्यर्थं वृद्ध्यर्थं वादो
विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अपवस्पृश्य आचार्यः दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुखं दत्त्वार्मृजं विश्वक्सेनं उपास्महे अस्मिन् गोत्रे सूत्रपदे समेतं अनन्तगरुडविश्वक्सेनं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखेन आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः स्मरामि अनन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवेदार्थम् आभरणार्थमक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धपुष्पधूपदेव कदलीफलताम्बूलानि सुवर्णपुष्पाणि मन्त्रपुष्पाणि समस्तोपचारान् अक्षतान् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः विश्वक्सेनाय नमः कदलीफलद्वयं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि समस्तराजोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि आचार्यः प्राणायाम्य तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः अङ्गजं स्मरामि शुभे शोभने मुहूर्ते அப்படியே எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ற மாதிரி கையை இப்படி வச்சுக்கோங்க வலது பக்கம் हरिरों तदेशे गोविंद गोविंद गोविंदास्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोरात्मजा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः परार्थे श्री श्वेतपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वेऽस्मिन् वर्तमाने यावकारिके प्रभवादि षट्संवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां शुभदतो वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायां शतभिषक्नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकिरणे शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल सद्गुण विशेषणमदट्टायामस्यां शुभतिथौ श्रीभगवदात्मजा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं भगवत्यञ्जलिरूपं लोकक्षेमार्थं पूर्वोक्तानुज्ञासङ्गविदोक्तप्रकारेण रमादेवी जगताय श्री सत्यनारायण स्वामी व्रतपूजां च अद्य करिष्ये यस्य कृतवक्त्राद्या पार्षद्या परश्रुतं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्षरं तवात्रये अस्मात् गोर्चाद्यावाहिनं भगवन्तं विश्वक्षेणं यदा शुभं यदा कालं प्रदट्टापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ராம் இப்போ இதுவரை என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம கோத்திரம் நட்சத்திரம் பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம் இல்லையா, அது பேர் வந்து அனுக்ஞே அப்படின்னு பேர். அனுக்ஞே அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சத்யநாராயண பிரதம் வந்து பண்ண போறோம். அதை வந்து இந்த தேவதைகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்து பர்மிட் பண்ணணும் இல்லையா. அதனால வந்து நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம பேரு நட்சத்திரம் கோத்திரம்லாம் சொல்லிட்டு அந்த தேவதைகள் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து பிரார்த்திச்சிடணும். அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணது வந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனம்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா எந்தவித சுபகாரியங்கள் பண்ணாலுமே வந்து விஸ்வக்சேனர் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த இதுல வந்து கணபதினு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கணபதி பூஜை இல்லாம பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம முதன்முக கடவுள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கணபதி பூஜையை பண்ணிட்டுதான் வந்து எந்த சுபகாரியங்களும் பண்ணணும். அப்படிதான் வந்து அந்த விக்னம் இல்லாம வந்து அந்த காரியம் வந்து பூர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து நம்மளது வந்து வைஷ்ணவத்துல வந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனம்னு சொல்லுவாங்க.
ஸ்மார்த்தால வந்து கணபதி பூஜைன்னு சொல்லலாம். அந்த விஸ்வக்சேன ஆராதனை வந்து நம்ம வந்து இந்த கர்ப்பத்துல வந்து ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு வந்து அந்த சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி முதல்ல வந்து அவர்கிட்ட பிரார்த்திச்சுட்டோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த சத்யநாராயண விரதம் வந்து நல்லபடியாக பூர்த்தி போய் வந்து நல்லா வந்து பூர்த்தி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி வச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது பேர் வந்து சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லி. சங்கல்பம்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உறுதிமொழி. இல்லைன்னா இந்த பஞ்சாங்கம்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா. பஞ்சாங்கம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, திதி வார நட்சத்திரம் லக்னம் யோககரணம் இந்த 5மே சேர்ந்ததுதான் வந்து பஞ்சாங்கம்னு சொல்லுவோம். பஞ்சம்னா வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல 5ன்னு கேட்டு 5. அந்த 5மே சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு நாள். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து இந்த நட்சத்திரம் இல்லை, இந்த நட்சத்திரம் வந்து லேட்டா தான் வருது, இல்லை இந்த லக்னம் வரல அப்படின்னா அந்த நாள் வந்து சூன்ய திதின்னு சொல்லுவோம். அந்த நாள் வந்து அந்த நாள்ல வந்து எந்த விதமான கர்மாவும் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த 5மே வந்து நல்லா சுபயோக சுபகரணமா இருக்கக்கூடிய இந்த தினத்துல வந்து முதல்ல வந்து நம்ம இந்த ஸ்ரீவாரி ஸ்ரீ பாலாஜி டெம்பிள்ல நம்ம வந்து சத்யநாராயண விரதத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். இதை வந்து மேற்கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் இதே மாதிரி நல்ல பக்த கோடிகள்லாம் வந்து நம்ம ஆத்துல பண்ண முடியாதவா எல்லாருமே வந்து ஆத்துல பண்ண முடிஞ்சாலும் சரி பண்ண முடியாட்டாலும் சரி இங்க வந்து நம்ம வந்து எல்லா பௌர்ணமியும் வந்து இதுக்கு மேல வந்து பண்ண போறோம். ஸோ எல்லா பக்த கோடிகள் எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு நல்லபடியா வந்து பண்ணிக்க வேண்டியது. ரெண்டாவது வந்து அந்த சங்கல்பத்துல என்ன பண்ணணும்னா, திரும்ப அந்த நட்சத்திரம் பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு முதல்ல இந்த என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திச்சுக்கணும். என்னன்னா திவ்ய பூம ஆந்தரிக்ஷாது உட்பாத இந்த பேசிக்ஸ் நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. நமக்கு நம்ம இப்போ ஒரு விரதம் பண்றோம், சத்யநாராயண பூஜை பண்றோம்னா ஏதோ ஒரு பிரார்த்தனையோட பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நம்ம நல்லா இருப்போம் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல் இருக்கும், பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம சத்யநாராயண பூஜை பண்ண போறோம் இல்லையா. அந்த சத்யநாராயண பூஜையை வந்து எதுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் நீங்கி நம்ம வந்து சுபயோக சுபகரணமா இருக்கிறதுக்கோசம் வந்து சத்யநாராயண பூஜை விரதம் வந்து கடைசியில வந்து அந்த கதையை வந்து வாசிப்போம் இல்லையா. அந்த கதையை வாசிக்கும் போது அந்த கதையிலேயே வந்து எல்லாமே இருக்கும். எதுக்கோசரம் சத்யநாராயண விரதத்தை வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும், எதுக்கோசரம் வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால வந்து நம்ம முதல்ல வந்து சங்கல்பத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆவாகனம்னு சொல்லுவோம். ஆவாகனம்னா என்னன்னா, நம்ம பூஜையை வந்து 4 விதமா பண்ணலாம். என்னன்னா கும்ப பிம்ப மண்டல யஜ்யம்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 விதம் இருக்கு இல்லையா. அந்த 4மே சேர்ந்தாதான், அதாவது ஒரு பூஜை பண்றோம்னா வந்து ஹோமம் இல்லாம இந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல கும்பம் வேணும். கும்பம்னா கலசம். கலசம் வந்து முன்னாடி வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த கலசத்துல வந்து முதல்ல வந்து ஆவாகனம் பண்ணணும். ஆவாகனம்னா ஒவ்வொரு தேவதைகளையும் வந்து அந்த கலசத்துல வந்து அந்த அவளுடைய மூல மந்திரத்தை சொல்லி அவளை வந்து வரவேற்க போறோம். முதல்ல வந்து யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல வந்து அந்த கும்பத்துக்குள்ள வந்து தீர்த்தம் இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா. அந்த வாட்டருக்கு வந்து அதிபதியை வந்து வருண பகவான்னு சொல்லுவோம். மழை வரணும்னா வருண பகவானை பிரார்த்திச்சுன்னு நம்ம வந்து வருண விருப்பம்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த வருண பகவானை வந்து அவருடைய மூல மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கங்கை யமுனை ஜீவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சன்னிதின் குருன்னு அந்த மந்திரத்தினெல்லாம் சொல்லி அந்த எல்லா நதியோடைய தீர்த்தமும் வந்து மந்திரகுமார் வந்து ஆவாகனம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல பேசிக் வந்து என்னன்னா, நம்ம மும்மூர்த்திகள்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் சொல்லுவா இல்லையா. அந்த மும்மூர்த்திகளை வந்து முதல்ல வந்து ஆவாகனம் பண்ண போறோம். அவளுடைய மூல மந்திரத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து சத்யநாராயண சுவாமி ரமாதேவி சகிதாய ஸ்ரீ சத்யநாராயண சுவாமி பரபிரம்மணே நமகான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த சத்யநாராயணர் வந்து ஆவாகனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சத்யநாராயண விரதத்துல வந்து கணபதியை வந்து ஆவாகனம் பண்ணணும். அதனால கணபதி ஆவாகனம் பண்ணிட்டு அஷ்டதிக் பாலகர்னு சொல்லுவோம். அஷ்டதிக் பாலகர்னா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 8 திக்கு இருக்கு இல்லையா. அந்த 8 திக்குக்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்காங்க. அந்த 8 திக்குடைய தேவதைகளையும் வந்து இந்த கலசத்துல ஆவாகனம் பண்ணிட்டு மேற்கொண்டு வந்து அவளுக்கு வந்து சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணணும். சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அந்த காலத்துலலாம் மனுஷா வந்து ஆத்துக்கு வர இல்லைன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறோம், ஒரு கல்யாணம் வைக்கிறோம்னா வெளியிலே நின்று எல்லாத்தையும் வந்து வெல்கம் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து அவளை முதல்ல வந்து வர வச்சாச்சு. அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவளை வந்து இங்க கூப்பிட்டாச்சு. வந்தவாளுக்கே முதல்ல வந்து சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணணும். சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வந்தவாளுக்கு வெளியிலே நிற்க வச்சு காலில் நம்ம தீர்த்தம் ஜலம்லாம் கொடுத்து திரும்ப உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவளுக்கு வந்து முதல்ல வந்தோடனே நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து தீர்த்தம் கொடுப்போம் இல்லையா. யார் வந்தாலுமே வந்து நம்ம ஜலாடத்தை வந்து கொடுப்போம், சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரிதான் அர்க்கிய பாத்தியம்னு சொல்லுவோம். அர்க்கியம்லாம் வந்து வந்தவளுக்கு முதல்ல வந்து அர்க்கிய பாத்தியம்லாம் வந்து காலையில் நம்ம தீர்த்தம் கொடுத்து ஆச்சமன தீர்த்தம் அப்படின்னா வந்து அவள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கோசரம் ஆச்சமனத்துக்கு தாகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு
தீர்த்தத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் வந்து என்னன்னா புருஷ சூக்தம் ஸ்ரீ சூக்தம்னு சொல்லக்கூடிய 2 மந்திரத்தையும் வந்து சம்போட்டுதல் அப்படின்னா வந்து இந்த புருஷ சூக்தம் பாதி ஸ்ரீ சூக்தம் பாதி அந்த மாதிரி வந்து சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில வந்து என்னன்னா அதுக்கு மேற்கொண்டு வந்து இந்த அர்ச்சனைகள்லாம் வாசிச்சுட்டு அந்த 108 நாமாவளிகள் இருக்கும் சத்யநாராயண சுவாமி அந்த அர்ச்சனைகள்லாம் வாசிச்சுட்டு அவ என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் இருக்கோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒன்று இன்வைட் பண்றோம் அவள் வந்துட்டான்னா வந்து அவளுக்கு எல்லாத்தையும் உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அவள் கிளம்பும் போது வந்து அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து அவளுக்கு தேவையானது கொடுத்துடணும் அவளுக்கு தேவை வந்த உடனே அவளை உபசரிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவளுக்கு தேவையான ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தாதான் அவள் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆவா ஃபர்ஸ்ட் அவள் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிளம்பும் போது அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து போதும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து ஒன்னே ஒன்றுதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எது இருந்தாலுமே வந்து நம்ம பணமா எவ்வளோ வந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருக்கலாம்ன்ற மாதிரி தான் தோணும். ஒரே ஒரு விஷயம் போதும்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனுஷனுக்கு வந்து நம்ம ஆகாரம் தான். அந்த நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பிட்றது மட்டும்தான் வந்து நம்ம ரைட் ஓகே நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக எடுத்து அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்தி அடையும். அதனாலதான் வந்து கல்யாண காலத்துக்குலாம் போனாக்க சாதம் போட்டு அனுப்புறதுன்னு சொல்ல எதுக்குன்னா அந்த சாதத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து திருப்தி அடையும். மீதி எதுக்குமே வந்து எத்தனை கோடி வந்தாலும் இது மேல ₹1 வந்து நல்லா இருக்கும் தான் நினைப்போம். அதுதான் மனுஷன் இல்லையா. அதனால வந்து அவளுக்கு தேவையான அந்த 5 உபச்சாரங்கள்லாம் 5 தேவையான அந்த பழங்கள்லாம் வந்து அவளுக்கு தேவையானதான் கொடுத்துட்டு கடைசியில வந்து நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள்லாம் வந்து அவகிட்ட வந்து கேட்க போறோம். ஆனா நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நீட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. அவளுடைய பர்சனல் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து கடைசியில வந்து இந்த அஞ்சலின்னு சொல்லுவோம் புஷ்பாஞ்சலின்னு சொல்லுவோம் அந்த புஷ்பாஞ்சலி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு உண்டான நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா கடைசியில வந்து அவள் வந்து எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டா என்ன சொல்லுவா அவள் கடைசி முன்னெல்லாம் வந்து ஆதுக்கு வந்து பாத பிரட்சாரணம் பண்ணி அவெல்லாம் சாதம் கொடுத்துட்டு அவள் வந்து கிளம்பும் போது வந்து பூர்ண தேங்காய் வந்து பையை கொடுத்து அனுப்புவான். நான் வெத்தலைபாக்கு பையை கொடுத்து அனுப்புவான் இல்லையா. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தேங்காய்க்கு தான் வந்து அந்த பவர் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேங்காய் வந்து நம்ம நார்மலா கையில வச்சுட்டு நம்ம பூமியில நடந்து போயிருந்தோம்னா இன்னுமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த காலத்துலலாம் அப்படிதான் வந்து நீரோட்டம் வந்து இருக்கா இல்லையா பூமியில அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு வந்து இந்த தேங்காய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேங்காய் வச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த நீரோட்டம் பூமியில நீர் ஓடினா தேங்காய் வந்து எழுந்து நிற்கும். அதனால தேங்காய்க்கு அதுக்கு உண்டான பவர்ஃபுல் இருக்கு. அந்த தேங்காயெல்லாம் வச்சு நம்ம எதுக்கு வந்து கடைசியில வந்து பூர்ணமா கொடுக்குறோம்னா அந்த தேங்காய்க்கு மட்டும்தான் வந்து பூர்ண பலத்துவம் உண்டு. அந்த தேங்காவெல்லாம் அவளுக்கு வந்து தேங்காய் பை வெத்தலைபாக்கு எதுக்கு கொடுத்து அனுப்புறோம். இப்போ எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ல வந்து ஆரஞ்சு இதெல்லாம் போட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைன்னா தேங்காய் தான் தேங்காய் பை தான் கொடுக்கணும். தேங்காய் கொடுத்தாதான் பூர்ண பலத்துவம் கிடைக்கும். அதனால தேங்காய் பையெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பும் போது நம்ம வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கேட்டாக்கா அவன் வந்து ததாஸ்து அப்படியே ஆகட்டும் பா நல்லா சாப்பிட்டோம்ப்பா ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துட்டு போவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அதே கான்செப்ட் இங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து ஆவாகனம் பண்ண போறோம். ஆவாகனம் பண்ணிட்டு வந்த வாழ்க்கை சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு ஆவாகனம் பண்ணும் போதே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே முன்னாடி அந்த தட்டுல வந்து சத்யநாராயண சுவாமி விக்கிரகம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த அக்ஷதையை வந்து நாம சொல்லும் போது அந்த சத்யநாராயண சுவாமி மேல ஆவாகனம் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் வந்து நீங்களும் கூடயே வந்து பண்ணிட்டு வரலாம். சோடசோபச்சாரங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கடைசியில வந்து கதாச்சரணம்னு சொல்லுவாங்க. கதா காலக்ஷேமம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கதைகள்லாம் வாசிட்டு மொத்தம் வந்து 5 சாப்டர் இருக்காது. 5 கதையும் வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து மங்களாரதி தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கும். இதான் வந்து பண்ண போறோம். எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஓம் பிரம்மஜஞானம் பிரசவம் வரஸ்தாபிஷேமதஸ்ருஜோ வேணாதஹ சபத்ரியாபவாஸ்ய விஷ்டா சதஸ்தஜோ நமசதஸ்ய விவஹ ஆகேஷ பன்னமவயத்பதம் தம் ஹிருதாவேனம் தாப்யரக்ஷதவா हिरण्यपक्षं वरुणस्य रोदन्यमस्तजोनो सकलं भरण्यम् आप्याय स्वसमेतदे विश्वदस्सोमविज्ञयम् भवावादस्य तङ्गथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सियवोर्देशजो रुद्रो विश्वाभुवनारुवेण तस्मै रुद्राय नमो अस्तु इदं अनुविचक्रमे त्रेधान्तते पदम् समूढमस्य पागुं शरे इन्द्रं विश्वा अवेपठन् समुद्रोगतदङ्गिरः अशीरपदं रथेनाङ्वादानां षट्पतिं पतिम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरस्ताभ्यषेमदस्रुजो वेणआदः समुद्रयापमानस्य विष्ठारतस्तजो नमसदस्य भवः आभोगादिरकं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावावः प्रथमावो नवावो नवावः सम्राडावो
ज्योति कस्याम सत्यमाम सर्वा देवता भवोद्भवस्वरा भवोन् जलपवित्रमतनीताः आपोधार्यमादिकहो देवेण तत्रोद्भूताः वसवत्सूर्यस्य रत्नभिः मूर्जाघैरक्षरान् घोराम् पामप्रजामगम्भेकं साफल्यं वर्गरमसो वृक्षदानमद्भूतान् शाखाजापल्लवज्जुलः युष्मात् कुम्भेरत्प्रजाम सर्वतोषापणत्वजेनालकेन मद्भूता प्रणेत्रहसं कलाश्कजागुरं पापं क्रीडां च मेणता सुवासे रविरामकः संभागं चित्रमेते महयाजं वेदमुने देव गोदावृतप्रेम पदेहं जगामेरे वरे ओम ब्रह्मे वरुणश्रीमप्याजमुनजा पापवस्राजके तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानत्वाधास्तेजमानो हरिर्हेणमानो वरुणेहवो अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं भगवन्तं पुण्डरीकाक्षं वरुणं ध्यायामि आवाहयामि वरुणस्य चिरमासनो ओम साधुरः सहस्राक्षः सहस्रपादे मुखं विश्वतो वक्त्रात्यगच्छञ्चलाङ्गुलं ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि हिरण्यवर्णां हरणें समरं नरदुर्गां चन्द्रावृण्मये मृत्युञ्जातवेदो महाभावो महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरां प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे श्रीभूषक्त्यै च धीमहि तन्नो नीलां प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे शिभो नीलानमेतस्य लक्ष्मीनारायणौ ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमम् पुरस्तां विषयमधस्रजो वेन आवह समुद्र्यापमास्य वक्तासनस्य नमसदस्य पुनः प्रणो देवी सरस्वती राजेभिर्वाचनीवती अस्मिन् कुम्भे भारते ब्रह्माणं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वे महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरां दगाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय गौरैकमासुरदाक्षप्ये विपदे गुणते चान्दुष्पदे अष्टापदे नमोदे भोगटे सहस्राक्षरामरामेन्द्यो मन्ये अस्मिन् कुम्भे उमामहेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् அப்படியே உங்க தட்டில் இருக்கிற அக்ஷதை எல்லாம் கையில எடுத்துட்டு அந்த சத்யநாராயண சுவாமி மேல அப்படி இப்படி சேர்க்கணும். யாருமே வந்து இப்படி சேர்க்க முடியாது. அக்ஷதையை வந்து இப்படி சேர்க்கணும். எப்பயுமே வந்து அக்ஷதை புஷ்பம் எதுவுமே வந்து நம்ம அர்ச்சனை பண்ணும்போது இப்படிதான் சேர்க்கணும். சரியா? ஓம் நாராயணாய வித்மஹே வாசுதேவாய தீமஹி தன்னோ விஷ்ணுः பிரச்சோதயாத் அஸ்மின் கும்பே ரமாதேவி ரஹித சுப்ரமண்யம் ரமாதேவி ரஹிதாய ஸ்ரீ சத்யநாராயணம் ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ओम यत्रेन्द्रवजामहे अततो नाभे कृते मगनं सिद्धवदन्न मोदे कुतो मतो महे मस्तालभृतसदर्मत्वहात्मतो भयङ्करहात्मनो अग्नेवरुणस्य विद्वान् देवस्य हैडोपयागदेवताः चित्तवर्णवस्मभृतानो विश्वाद्वेषागं सिद्धमध्यस्मत् यस्मिन्नक्षत्रे जनये धराजास्मिन्नेन भिषन्तन्द्रेवाः सिद्धं भविराजदामार्वात्मानं भरणेर्भरन्तो सन्नं धपेतमानवस्थस्तेन स्थेत्य वेशेन प्रसादो निरेण कृतेभ्यमस्तो अहेण मौनवर्णेः वरुणकं समानाय प्रमोषे सहस्रे प्रयाति महादेवं सोमं भवेदवानसर्वविद्धतः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्मा सोमे शिवो देवताः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यवाहिने नमो भजन्मे महाराजाय नमः यक्षराजगुभैराज वैश्रवणाय धनतां ध्यानिपतये धनतां समृद्धिमे देवताय नमः यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे शङ्खनिधिपत्निजलमेत श्रीलक्ष्मीकुबेरं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम घनानान्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनार्भवस्वस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोदिभस्ये अस्मिन् कुम्भे वल्लभान् गौरमेधस्ये महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अवागिदाभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यो नमो नमः नमस्तोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि
ॐ पुरुषते वेदकं सर्वं यद्भूतं यत्सभव्यं उदामदत्तश्रेदानः यदन्येन तां महावहसादवेदो लक्ष्मीमणवरागिणी यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषामहं रमादेवी रहित श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः आसनं समर्पयामि ஏதாவானஸ்ய பிரதிமான் எல்லாரும் அவ கையில புஷ்பத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே கையில வச்சுக்கோங்க. சொல்லும் போது அந்த சத்யநாராயண சுவாமி மேல சேர்த்து अथोज्यायागस्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि अष्टपूर्वामृतमध्यामस्कनादप्रभो सृजन् देवी वक्मजे श्रीर्मा देवी तुषतां रमा देवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि कृपादोर्भवदे पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामते आसनावचने अभीकाङ्गो विदां विरम्यप्राकाराभाद्रां कुलम्बीं धृत्वां दर्पयन्तीं मेस्तां पद्मवर्णां वामिहोमग्रजे श्रियम् रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः अर्घ्यं समर्पयामि अस्माद्विरामदायदा विराजो मध्यपूरुषः विराजो अत्यरिच्यता रस्याद्भवमनसा पुरः चन्द्राप्रभासां दिशता गुणं लोके तां पद्मनीवीं तृणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां तां प्रणे रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः आसमनं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वदा वसन्तो अस्यासीताज्यं ग्रीष्मजन्मशरद्भविः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोऽथलुल्लः तस्य फलानि पदार्थन्तमाजान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः आनं समर्पयामि आनन्दमासमणीयं समर्पयामि तं यज्ञं बर्हिषोष्णन्ये पुरुषं जातमकृतः तेन दैवा अजजन्द साध्यार्णयस्तदे उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्चमणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमन्यं ददातु मे श्रीरमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः संस्कृतं कृताज्यम् अशोकस्तागस्य क्लेवायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चये शक्तिपासाबलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोदिनसमर्थ्यन्तु सर्वाद्यन्नतमे गृहात् रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः यज्ञोपवीतधारणं समर्पयामि तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः कृतस्वामानिजद्भिरे सन्दारुंसजद्भिरे तस्मादेभ्यस्तस्माकर्मत्कारान्तराजन्मानित्यर्थान्तरेषणीः ईश्वरीयं सर्वभूतानां तामिहोमर्पये श्रियं रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि तस्मादस्माजायन्त एकेषु भयादतः आमोहजग्निरे तस्माद् आज्जाता अजातयः मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमशीमहि वसूनामरवंशस्य मजिष्टे प्रजताम्यतः रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः अक्षतान् समर्पयामि वल्लिकादीनि सुखदीनि मालाजतीनि वै प्रभो मया हृतजानि पूजात्मं पुष्पाणि प्रकृतामृतं रमादेवी रहितश्री सत्यनारायणस्वामिने नमः पुष्पमालां समर्पयामि अत्र पुष्पेण सम्पूजयामि अङ्गपूजापनकाले नमः ॐ नारायणाय नमः पादो पूजयामि ॐ शेषाराजने नमः कल्पो पूजयामि
ओम कालस्वरूपिणे नमः संख्ये पूजयामि ओम विश्वरूपाय नमः दारुणी पूजयामि ओम जगन्नाथाय नमः गुप्त्यं पूजयामि ओम कमलनाथाय नमः नाभिं पूजयामि ओम जगद्वक्षये नमः वक्षीं पूजयामि ओम लक्ष्मी विलसत्यक्षसे नमः अक्षस्तलं पूजयामि ओम जग्वादिहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि ओम चतुर्बाहवे नमः बाहून् पूजयामि ओम श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम चन्द्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि ओम सत्यवासे नमः वस्त्रं पूजयामि ओम श्रीशाय नमः नासिकान् पूजयामि ओम रवीन्द्रलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि ओम दिक्रोधराय नमः श्रोत्रे पूजयामि ओम सर्वव्यापिने नमः शिरः पूजयामि ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वान् अंगानि पूजयामि எல்லாருக்கும் அப்படியே முன்னாடி சத்யநாராயண சுவாமி அப்படியே அப்படியே தொட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அப்புறம் புஷ்பத்தை எடுத்து கையில வச்சுட்டு அர்ச்சனை வாசிட்டே வர ஒவ்வொரு அர்ச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு புஷ்பமா சேர்த்துட்டே வர வேண்டியது. ஓம் சத்யதேவாய நமः ஓம் ஸ்ரீ பூமிநிலாய அபாகதாभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः अष्टोत्तरनामार्चनानि करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञाप्रजाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यनन्दनाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकामिने नमः ओम सत्यमित्राय नमः ओम सत्यमङ्गलाय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्यप्रतापदये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्ध्याय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रदाय नमः ओम सत्यसन्तुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यसात्मदाय नमः ओम सत्यप्रवन्दनाय नमः ओम सत्यपुरुषे नमः ओम सत्यज्येष्ठदाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यगम्भीरे नमः ओम सत्यधर्मणे नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्याधीराय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकलाय नमः ओम सत्यवत्याय नमः ओम सत्यवत्सत्सवाय नमः ओम सत्यवत्सवे नमः ओम सत्यामोगाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदाङ्गाय नमः ओम सत्यदरात्मने नमः ओम सत्योत्तराय नमः ओम सत्यसुषे नमः ओम सत्यानुदाय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्यसङ्गाय नमः ओम सत्यसर्वगाय नमः ओम सत्यनवाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यभूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसूत्राय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतमसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालाय नमः ओम सत्यस्थराय नमः ओम सत्यरक्षकाय नमः ओम सत्य दिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्वाय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यबलाग्नाय नमः ओम सत्यकरवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंवर्ताय नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यण्डाय नमः ओम सत्यावाचवे नमः ओम सत्यशिक्षकाय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्यलीलाय नमः ओम सत्यशेपादाय नमः ओम सत्यविद्याय नमः ओम सत्योत्तराय नमः ओम सत्योत्तराय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यरणाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यवाहवे नमः ओम सत्यशक्वाय नमः ओम सत्यमूर्त्याय नमः ओम सत्यतन्मुष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यरोहत्तरे नमः ओम
सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यजरसे नमः ओम सत्यमखुटाय नमः ओम सत्याप्रभाय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम श्रीरत्यगुप्ताय नमः ओम श्री सत्यधृताय नमः ओम सत्यभावाय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम श्री रमादेवी जगदलीलज्जनारायण स्वामिने नमः नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि இது டோட்டல் பண்ணிட்டு அது போனோம் எல்லாமே வந்தானே ஆல்ரெடி महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतजगत्प्रदायै नमः ओम सद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सरस्यै नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वासये नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुधये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम भावरजे नमः ओम सत्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम देवतायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारण्ये नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षै नमः ओम क्षीरोदरम्भवायै नमः ओम अनुग्रहपदायै नमः ओम बुद्धायै नमः ओम अनकाय नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोक विनाशन्ये नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम ब्रह्मप्रजायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुखे नमः ओम पद्मनाभप्रजाय नमः ओम प्रमाये नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिन्ये नमः ओम पद्मगन्धन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम कृताघमन्ये नमः ओम प्रभाये नमः ओम चन्द्रवदनाय नमः ओम चन्द्रसहोदरये नमः ओम चन्द्राय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चन्द्रलोपाय नमः ओम इन्द्राय नमः ओम इन्द्रशेखराय नमः ओम नागराजतनये नमः ओम धरण्ये नमः ओम वारेन्द्रशिवाय नमः ओम शिवकर्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम नमलाय नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम दुर्गे नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः ओम प्रेतपुष्करण्ये नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्लमाल्याम्बराय नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम निर्मलजाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम कृष्णब्रह्मये नमः ओम सुन्दराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हिरण्मये नमः ओम हेमपालन्ये नमः ओम धनधान्यकर्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम त्रैलोक्यज्ञाय नमः ओम सुभप्रदाय नमः ओम प्रभवेत्मगदानन्दाय नमः ओम वरुणज्ञे नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम सुवाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रराजाय नमः ओम जजाय नमः ओम मङ्गलादेव्ये नमः ओम देव्ये नमः ओम विष्णुवक्षस्थलञ्जसाय नमः ओम विष्णवत्ये नमः ओम प्रसन्नाट्ये नमः ओम नारायणसमाश्रदाय नमः ओम दारिद्र्यदर्पण्ये नमः ओम सर्वभद्रकपालन्ये नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओम
भवनेश्वरजे नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम भक्तलक्ष्मी नमः ओम नानाविध कुङ्कुमाक्षराणि समर्पयामि मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि अवागताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः पुनः पूजां सकरिष्ये पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखेन सुमनीयं समर्पयामि ओं भूर्भुवस्सुवः समर्पयामि अनन्तरमासुमनीयं समर्पयामि वस्त्रमुत्तरीयाभरणाद्यलङ्कारार्थ अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धां धारयामि गन्धस्योपरि पुष्पमालिकां समर्पयामि एते गन्धाक्षतपत्रपुष्पमुत्तरीयदोपदीयमाभरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचारां क्षतां समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वाग्दाभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः कदली फलानि निवेदयामि ताम्बूलां समर्पयामि सुवर्णपुष्पं मन्त्रपुष्पं समस्तोपचारार्थे अक्षतानि समर्पयामि எல்லாரும் புஷ்பத்தை எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க. மந்திர புஷ்பம் ஆக போறது கையில வச்சுட்டு நாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் இருக்கோ அவளுக்கு தனியா அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவ கிட்ட இருக்கிற மூர்த்தியிலேயே சேர்த்துடலாம். ஓம் யோபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசவான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம் पुष्पवान् प्रजावान् वसवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति असो वेदवन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमावा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योत्सवामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति சொல்றது அப்படியே எல்லாரும் சொல்லலாம் ஓம் யானி காணிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி வினஷ்யந்தி பிரதக்ஷிணம் பதே பதே प्रकृष्ठ पापनाशाय प्रकृष्ठफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद पुरुषोत्तमा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दना यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मतलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा रमादेवी सहित श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अनेक कोटि प्रार्थना मंगल प्रदक्षिण भक्ति श्रद्धा उपचार वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अवावालुकुंडान प्रार्थनेगल्लाम வந்து மனசுலயே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அப்படியே சத்யநாராயண சுவாமி கிட்ட சேர்த்துங்க புஷ்பத்தை
சொல்லுங்க. மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஜனார்தன யப்பூஜிதம் மயாதேவ பரிபூர்ணம் ததஸ்துதே அமோகம் புண்டரீகாட்சம் ரிசிம்ஹம் दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं आवाहनं जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम यदक्षरम तत्पृष्ठं मात्राहीनं भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव सत्यनारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दो मात्राणि पदपादानि अक्षराणि च न्यूनानि छादिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहिताभ्यः आवाहि ताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः अनेक कोटि प्रार्थने प्रदक्षिणे मंगल पुष्पाणि उपचाराणि समर्पयामि। एवं गुणवसे सर्वदट्टायामस्यां वर्णवास्यां सुमतदोषि भगवदात्मजा शिवं प्रीत्यर्थं सगुणं भयोश्च सर्वेषां भक्तगौरजनानां शरीरे वर्तमानमस्तमानवरिष्ठमाने समस्तरोहनिवारणार्थं दुरितोपचारार्थं सर्वापस्तारार्थं पूर्वोक्त समस्त सौभाग्यदा सिद्ध्यर्थं दीर्घसौमङ्गल्य सिद्ध्यर्थं सत्पुत्रवाप्त्यर्थं श्री सत्यनारायण पूजां ते श्री सत्यनारायण कदा श्रवणं करिष्ये तदनन्तरम् उपायनदानं पुनः पूजां च अद्य करिष्ये। இதுவரையும் சத்யநாராயணன் ஆவாகனம் பண்ணி உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம். கடைசியில் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ கதையை வாசிக்க போறோம். அந்த கதையில தான் என்னென்ன பழக்கம் எதனால் இந்த சத்யநாராயண பூஜையை பண்றோம், இந்த சத்யநாராயண பூஜையை பண்றதுனால என்ன மகிமை அப்படின்றது இந்த கதையில தான் தெரியும். ஸோ கதையை வாசிக்கும் போது எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா லிசன் பண்ணுவோம். வெளியால இங்க பெருமாள் சேர்க்கணும் பக்கத்துல. அம்மா கொஞ்சம் அந்த வெளியில தண்ணியில கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி ஃப்ரூட்ஸ். Do you speak Tamil? That's it. வாஷ் பண்ணி Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Sudha
who was well versed in narrating the Puranas, was also present at the time. Shaunak Muni asked Maharishi Sudha, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation." Maharishi Sudha answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question." Listen very carefully as I'm going to tell you what Lord Vishnu himself told Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas, results of actions from their current and past lives. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikuntha, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why have you come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill your wishes." Narada replied, "O Bhagwan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering." Lord Narayana spoke to Narada as follows, "Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can rid of all its sufferings by observing the Sathyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond." On hearing these words, Narada was filled with joy and said, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observance." Lord Narayana replied, "On a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Sathyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed and gifts must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This will bring contentment to the devotees observing the puja. Thus ended the first chapter of Sathyanarayana Katha in the Reva Kanda of Skanda Purana. ससिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये यस्य वरद वक्रार्ध्य पारिषद्य परशरं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत
अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने क्षेत्रे व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराः मध्ये शुभकृत् नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभदितौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर युक्तायां सदभिषं नक्षत्र युक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं पुनः सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां पौर्णम्यां शुभदितौ ममोपाप्त समस्त दुरित अक्षयद्वारा जिन्दन् गोत्र उद्भवस्य अपभरणी नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य विक्रम शर्मणः अस्याः धर्मपत्न्याः चित्रा नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः रेखानाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातस्य अक्षतशर्मणः अस्माकं मम सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अमाप्यर्थं रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसादेन सिद्ध्यर्थं श्रीदेवी भूमिदेवी समेत अलर्मेलु मंगानायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अद्य रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामी व्रतपूजां करिष्ये। बोल सत्यनारायण भगवान की। Maharishi Sutta continued his narration. Chapter 2. Maharishi Sutta continued his narration. O learned rishis, let me tell you stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kasi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, "Why are you wandering around aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor Brahmin.
Unable to beat the pangs of hunger, I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Sathyanarayana bestows his grace and his devotees and removes their sorrows. So you should observe this vrata and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Sathyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed only on the puja. That day, he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed Sathyanarayana puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Sathyanarayana, he was able to come out of his poverty and lead a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained salvation. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed the puja. Maharishi Suda then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kasi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kasi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thoughts, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly and with devotion along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. Thus ended the second chapter of the Satyanarayana Katha in the Revakanda of Skanda Purana. Bol Sri Satyanarayana Bhagwan ki. Chapter 3. Maharishi Suda continued, O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king named Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gifts to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana puja on the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord, Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly tell me how to perform the puja. I would also like to observe the vrata, as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu, the merchant, all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her
that he has resolved to perform Sathyanarayana Puja after a child is born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messages found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Sathyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Sathyanarayana. One day, Sadhu set on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Sathyanarayana. Some thieves robbed the King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law and arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of Maya of the Lord, no one paid attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Sathyanarayana Puja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Sathyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja. She resolved to observe the vrata herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja, and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayers. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were innocent. Lord Satyanarayana also warned that the king, he must follow his orders, or else he will face terrible consequences and risk losing his kingdom and his family. Next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, but the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gifts and also returned their merchandise his soldiers had confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. Thus ended the third chapter of Lord Satyanarayana Katha in the Revakanda of the Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki.
and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnestness with respect to devotion to the Lord in the past was questionable, and he was therefore still subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Sathyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Sathyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from the boat? We do not have any valuables in our boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Sathyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Sathyanarayana, saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I wish, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing the Sathyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw that the boat had capsized and her husband had drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Sathyanarayana Puja and prayed to Lord Sathyanarayana again and again. At this juncture, Lord Sathyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad and return." With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took the prasad and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Sathyanarayana Puja every full moon day. With Lord Narayana's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Thus ended the fourth chapter of Lord Sathyanarayana's Katha in the Revakanda of Skanda Purana. Bolo Sri Sathyanarayana Bhagavan ki.
Chapter 5. Maharishi Sudha continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Sathyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowherds were performing the Sathyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were destroyed. Then it occurred to him that Lord Sathyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Sathyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Sathyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharishi Sudha said, "O holy men, I have narrated to you the Sathyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this Vratha, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the Vratha can lead to gratification of one's wishes." Maharishi Sudha concluded his narration by telling the assembled rishis what blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kasi was reborn as Sudama, friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devoutly served Lord Rama and attained salvation. King Ulkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadhwaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave mankind the code of conduct for righteousness. Thus ended the 5th chapter and the narration of Maharishi Sudha, after which Shaunak and the other rishis returned to their respective places. Bolo Shri Sathyanarayana Bhagavan ki Jai. पूजां करिष्ये आवाहिताभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। मह्यं समर्पयामि, वाद्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः स्नानं समर्पयामि, स्नानानन्तराचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोद्धरीय यज्ञोपवीताभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि, नित्यपरिमलगन्धान् धारयामि। दन्दस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि, अलङ्करणार्थे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि, माल्यार्थे पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः, ॐ वामनाय नमः, ॐ श्रीधराय नमः, ॐ ऋषिकेशाय नमः, ॐ पद्मनाभाय नमः, ॐ दामोदराय नमः, ॐ रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। उपमाघातगामी ॐ भूर्वसुभूर्मभूर्वन्तं भूर्वदं योगोस्तां भूर्वदं भूर्वजं वजं भूर्वारुत्वं देवानामसिजवागदाभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। सुगन्धपरिमलधूपमाघ्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं ददर्शयामि, धूपदीपानन्दरमासमणीयम्। समर्पयामि प्रोक्षाणि वेद्यावं वोद्भवस्वः अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतस्वरूपिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। எல்லாரும் தட்டில் இருக்கிற ஆப்பிள் அப்படியே ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியே இது பண்ணிட்டு அப்படியே தலையில் சாப்பிட்றவர் அதை மூர்த்தி பண்ணுவோம். अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतस्वरूपिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। वाग्भ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। रमादेवी देहरति सत्यनारायण स्वामिने नमः। क्षीरं निवेदयामि। काश्मीर
फलं सर्वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि निवेदानन्दरवादमणीयं समर्पयामि समस्तोपचारार्थे अक्षतां समर्पयामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः रमादेवी सत्यनारायणस्वामिने नमः अनेन अर्घ्य प्रदानेन भगवान् सर्वात्मकः श्री सत्यनारायण प्रीयतां यस्य स्मृत्य नमोज्ञात पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यवन्देव अच्युतम् अनया पूजया श्री सत्यनारायणः प्रीयताम् ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री भगवदात्मजा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वरूपस्य सत्यनारायण पूजकर्माङ्गमुपायनदानो करिष्ये। सत्यनारायण स्वरूपस्य इदमासनम् इमे गन्धाः इमानि पुष्पाणि शीतलते ददानि च सुरेशः प्रतिगृह्णाति सुरेशो वैदिदात् सुरेशः सदा कौदित्यम् सुरेशाय नमो नमः। इदम् उपायनं सदक्षिणाकं शताम्भूलं श्री सत्यनारायण स्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संव्रजते नमः नमः अच्युत प्रीयताम्। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ரெண்டு புஷ்பத்தை கையில வச்சுன்னு எல்லாரும் அப்படி கையில எடுத்துக்கோங்க. Now that we have concluded the Sathyanarayana Vrata, so here's a plate if you want to, have some bhavanai for the priest. Please offer it in this plate here. And the temple payment can be made at the table here in the office or outside where the office table is set up outside. It's 108 for the Sathyanarayana Puja. And the Vigraham is yours to keep.
And like I said before, please take the Vigraham home, do a Tirumanjanam, and place him in your puja place, mandir, whatever you have. And the priests also come to your houses to perform Sathyanarayana puja. So avail the service, and Sathyanarayana Perumal will come to your house to perform with the priest, and the priest will perform the puja. So like in the story, you can invite all your friends and family and perform the puja and live happily forever. Thank you. Yajnena yajnam ajasanta devaha tani dharmani prathamani asanne dehanakam mahimanaha sasante yatra purve sadhyaha santi devaha padmapriye padmini padmahaste padmalaye padmadalayadakshi vishwapriye vishnumanonukule padpada padmam mayi sannidatva yani kani ca papani janvantaram kritani ca tani tani vinasyanti pradakshinam pade pade ya brahmadya devata sarva naradadya surashtaha yam namanti नमस्तस्मै श्रीमते हरये नमः रमादेवी सहित श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रदक्षिण நமஸ்காரான் சமர்ப்பயாமி. அப்படியே எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே 3 பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வந்து கிட்டக்க வந்து அந்த புஷ்பத்தை வந்து இந்த சுவாமி கிட்ட சேர்த்துட்டு அப்படியே செய்ய சொல்லலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு போய் ஒண்ணா வந்துடும். க்ளாக்வைஸ் 3 வாட்டி சுத்திக்கலாம். அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா வந்து தம்பதியா வந்தா தம்பதியா வந்து இதுல சேர்த்துட்டு அப்படியே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு அப்படியே செய்யணும். வெங்கடேசமாமா ஆமாமா ஆமி பின்னால ओके साथ में क्या हाँ जी हो गया तो सापे मामा का पापू उम्मा चीज़ से कम कर कितने अगर हमारे रसोई ஆமாப்பா வித்யா கொஞ்சம் இந்த பீஸ் எடுத்து அது கவிதா கவிதா பீஸ் எடுத்துக்கணும். இங்க ஆபீஸ் ஒரு ஆள் வேணும். சத்யநாராயண பூஜை. So Shanti will tell it. Shanti, can you be in office? Take one. Okay, apna I'll ask one person to get. இல்ல I just yeah இல்ல அவங்களுக்கு நான் கிரெடிட் கார்டு மாத்திரம் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். சத்யநாராயண எடுத்துக்கலாம். கிரெடிட் கார்டு அங்கலாமா? கிரெடிட் கார்டு அங்க எங்க ஓபனா இருக்கா? அத இந்த பாக்கு தட்டை அப்படியே நீங்க ஆத்துக்கு எடுத்துன்னு போங்க.
அங்க ஓகே. நீங்க பேமெண்ட் பண்றவாள்லாம் அந்த வெளியில டேபிள் ஓபன் ஆயிருக்கு. வெளியிலையா? சரி, இதை 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 எடுத்து வச்சுருங்க, யாரும் உக்காரல. ஓ அப்படியா? சரி சரி. அதே மாதிரி சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கணும்மா. அந்த பாக்ஸில் போடு. சத்யநாராயண அந்த பாக்ஸில் போடு. For the payment, the office is outside, so you can exit this way. So they are there. Yeah, if it's check or Zelle, we can do it here. If it's credit card, you have to do it. Credit card we still have. Yes. For date oda date undalla permanent. Very nice. Yeah. நான் சும்மா வந்து உட்காந்து சரி பிஜி சொன்னா வந்து உட்காந்து Perma knows that you need rest, that's why he made you sit here and relax. ரெண்டு கொடுங்க லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு போறல मनोहराय नमस्ताभीष्टदाय महितमङ्गलम् रूपाय वेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तस्वामिताय शुभमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराज च मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् आत्मा रामा अनन्तरमण अच्युत केशव हरिनारायण भवभयहरणा वन्दितचरणा भवभयहरणा वन्दितचरणा सच्चिदानन्द सत्यनारायण भवभयहरणा वन्दितचरण सच्चिदानन्द सत्यनारायण आत्मा राम अनन्तरमण நீங்க வாங்க.